Hello and welcome to The Hindu. I am Vijaita Singh and I cover internal security and the Home Ministry for The Hindu. Today we are diving into a significant decision regarding the Agnipath scheme and the Agniveers. The Union Home Ministry is working on a major policy shift regarding the Agniveers. We at The Hindu reported on December 20 that months before the first batch of Agniveers retires, the Ministry of Home Affairs has decided to increase reservation for ex-Agniveers in Group C posts of the Central Armed Police Forces from 10% to 50%. The first such notification has been issued for the Border Security Force. The Central Armed Police Forces comprise the Central Industrial Security Force, Border Security Force, the Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Police, Sashastra Seema Bal, and the Assam Rifles. On December 19, the MHA notified that half of all constable posts in the Border Security Force will now be reserved for ex-Agniveers. While they are exempt from physical tests, they will still need to clear written exams. The minimum qualification, Class 10 pass. This is a significant shift from the earlier 10% reservation announced in 2022. The announcement of the short-term recruitment in the armed forces had sparked violent protests in 2022 and became a major election issue in 2024. Back then, the government also promised age relaxation for Agniveers applying to CAPFs. After it came to power for the third term in 2024, the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance has decided to amend the recruitment rules to absorb as many Agniveers as possible in government jobs. In fact, on June 17, MHA was tasked to coordinate activities for further progression of ex-Agniveers. What is the Agnipath scheme? Under the scheme, after retirement, 25% or 1/4 of the total Agniveers would be selected into the regular ranks of the three services, Army, Navy and Air Force, on a permanent basis. The age bracket for new recruits was fixed at 17.5 to 21 years of age. Until 2026, the overall intake has been capped at 1.75 lakh. As opposed to the 15 years plus service followed by lifelong pension, the new recruits or Agniveers, literally fire heroes, will have a 4-year tenure, including 6 months of training. Upon completion, they will be given an opportunity to apply for permanent cadre, and up to a fourth would be enrolled as regular cadre. The rest will exit with a tax-free purse of approximately rupees 11.71 lakh and return to civil life to aid in nation building. The first batch of Agniveers retire in 2026. So what are the new rules notified by MHA? The amended recruitment rules say that BSF will conduct the first phase of recruitment for ex-Agniveers, comprising 50% of total recruitments, and the Staff Selection Commission will handle the second phase for other candidates. A senior government official told The Hindu that the 50% reservation for Agniveers will not impact the existing reservation matrix for the scheduled caste, which is 15%, scheduled tribe 7.5%, and the other backward classes at 27%. While the recruitment in CAPFs has to adhere to the existing caste-based formula and cannot exceed the 50% cap fixed by the Supreme Court, appointments in the armed forces, Army, Navy and Air Force are not based on caste lines. Ranbir Singh, General Secretary Alliance of All Ex-Paramilitary Association, said that hundreds of young men preparing for constable exams in CAPFs will be impacted by the policy as it will shrink the employment opportunity for them. तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अगर उनको 50% लोगों को उधर रखती आर्मी में परमानेंट, तो उनको पेंशन देनी पड़ती। पुरानी पेंशन है ना, सेना में तो बीएसएफ में तो पुरानी पेंशन नहीं है, बाकी सीएपीएफ में, तो इसमें जो है उनको हजारों करोड़ का फायदा होगा, यानी कि वो पुरानी पेंशन देने से वो लोग बचेंगे। दूसरा, जो जहां तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का जहां तक सवाल है, तो अग्निवीरों को सेना में तो कोई क्राउड कंट्रोल का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सांप्रदायिक दंगे होते हैं जिसमें सीआरपीएफ या अन्य बल महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे दिल्ली में जब दंगा हुआ तो सीआरपी ने उसको अच्छी तरह से संभाला। तो ये क्राउड कंट्रोल और ये ट्रेनिंग वहां पे सेना में नहीं दी जाती, जहां तक मेरी जो समझ है।
इलेक्शन में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बड़ी भूमिका रहती है। मुझे नहीं लगता कि सेना के जवान को या अग्निवीर को ये चैप्टर भी क्या उसमें होगा कि भाई निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की क्या भूमिका रहती है। सेना तो चुनाव नहीं करवाती, तो और वो अलग प्रवेश से आएंगे। अब CISM में 30 दिन की छुट्टी है, सेना में 60 दिन की, कैसे होगा? क्या फिर से इनको लाठी डंडे की ट्रेनिंग दी जाएगी जो हमारा एक हिस्सा होता है? घुटने पे मार, जबड़े पे मार, या जो भी जो मतलब बसते हैं, तो वो हमारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो इनको नहीं है। तो क्या इन लोगों को फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ये तो आओ भाई। और जहां तक BSF में 50% देने की बात कह रहे हैं, यानी कि जो जवान गांव देहात में रोज दौड़ते हैं, रोज मतलब तैयारियां कर रहे हैं SSC GD के लिए, सिपाही पद के लिए, वो तो धरे के धरे रह जाएंगे, वो तो देखते रह जाएंगे। कैसे होगा? फिर जो सेना के परिवेश से जो जवान आएगा और वो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में आएगा, तो उसकी सोच में, उसकी ट्रेनिंग में, उसके हाव भाव में फर्क होगा। क्योंकि सेना में तो पीछे भी बहुत सारी कुछ सुनने में आया कि भाई जो है ना, वो उसकी तो 40 साल नौकरियों को क्यों उग्रवादियों से टक्कर लेगा, नक्सली से, या क्यों सर? The Agnipath scheme, launched in 2022, aimed to recruit youth for 4-year tenures in the armed forces. While the government said this was to aid nation building, critics, including the Congress party, have called it disastrous, accusing the centre of pushing agniveers towards private security jobs instead of pensionable government roles. Will this help agniveers find stable careers, or does it raise more questions? Share your thoughts in the comments below. Don't forget to like, share and subscribe to The Hindu for more in-depth analysis. Thank you so much for watching.